Friends, how are you all? I hope all are good. Yesterday I have given test. I hope you have done. So today I will start chapter 19, three-dimensional shape, cuboid, cube, cylinder and sphere. Idea of space. We When we look at something empty like a box, room, or bowl, it has space. We can keep things in that space. A park has space us to play. Idea of space means when we look at something empty, जब हम कुछ खाली चीज़ें देखते हैं लाइक बॉक्स खाली है, एम्पटी है, रूम, बाउल, उसके अंदर जो एम्पटी होता है वो स्पेस होता है, इट हैज़ स्पेस. वी कीप थिंग्स इन दैट स्पेस. हम उस स्पेस की जगह हम कुछ भी कोई भी वस्तुएं रख सकते हैं. ए पार्क हैज़ स्पेस फॉर अस टू प्ले. जो पार्क है, पार्क में स्पेस होता है प्ले करने के लिए. तो solid an object that has a fixed shape and size is called a solid. से कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी फिक्स्ड शेप और साइज होता है, दैट इज कॉल्ड solid. A solid occupies a fixed amount of space. Solids occur in different shapes. काफ़ी अलग अलग प्रकार की शेप्स होती हैं. These shapes are known 3D shapes, three dimensional shape. The various types of these shapes are given below. This first shape is cuboid. You know cuboid. You have done in 5th standard already. Okay. Cube, cylinder, sphere, cone, triangular prism, square pyramid, tetrahedron. Okay. First, I will explain a first cuboid. What is cuboid? Solids such as a wooden box, a matchbox, a brick, a book, almirah and etc. are in the shape of cuboid. Cuboid की shape कौन सी होती है? Daily you will use matchbox, माचिस की डिब्बियाँ. This is the shape of cuboid. Brick, you look at brick. Book, जो आपकी बुक है वो भी क्या है? क्यूबॉइड की शेप की है. अलमीरा क्यूबॉइड की शेप की है. ओके. सम ऑफ दी शेप्स आर गिवन, जैसे वुडन बॉक्स, मैच बॉक्स, बुक, अलमीरा. ओके. एंड नेक्स्ट इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड हैज़ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. क्यूबॉइड की क्या होती है? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है. दिस इज द फिगर ऑफ क्यूबॉइड. दिस इज द रेक्टेंगल शेप. Okay. Next, one rectangle shape also. This, and this also. This is the cuboid. ऐसे बनाना है आपने cuboid. Okay. Rectangle, one rectangle and other rectangle. Next, various parts of cuboid are given below. Faces. A cuboid has 6 rectangular faces. The opposite faces of cuboid are identical. Next, edge. Two adjacent faces of cuboid meet to a line segment called an edge of a cuboid. A cuboid has 12 edges. Vertex. Their edges of cuboid meet at a point called a vertex. A cuboid has 8 vertex. The shape of cuboid. This is the shape of cuboid. Rectangle shape. This is the base of rectangle. This is the cuboid. Okay. This and this also. This is the cuboid. Okay. The faces of cuboid. Faces, 6 rectangular faces. 6 faces. 1, 2, 1, 2, 3, 4, that is like 5 and complete 6. And next,
edges. Edges, 12 edges. Edges means two adjacent faces of cuboid meet in a line segment. जो line segment है ना वही क्या होते हैं हमारे edge. Cuboid has 12 edge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. This is the 12 edges. Okay, and next, vertex. Vertex is, this is the shape of cuboid. Again I will do one vertex, 2 3 4 5 6 7 and 8 vertex. Okay, you will understand. Next, shape of cuboid. Same shape of cuboid. Cuboid is base of rectangle but cube is base of square. Square shape. इसका बेस क्या है? स्क्वेयर. स्क्वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल. दिस स्क्वेयर सेम, बस ये क्या है? स्क्वेयर बेस पे बनता है. दिस इज द क्यूब. ओके, एंड ए क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल. उसकी हाइट, क्यूबॉइड की हाइट लेंथ ब्रेथ होती है बट क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट ऑल आर इक्वल. दिस इज कॉल्ड क्यूब. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूब. एग्जाम्पल ऑफ क्यूब: ice cubes, sugar cube, dice are all example of cube. A cube has 6 square faces, 12 edges and 8 vertex. Same of cuboid. Cuboid के faces 6, edges 12 and vertex 8. So same of cube के 6 square faces, 12 edges and 8 vertex. And example: sugar cube, ice cube, dice. You know dice देखिए ना, डाइस जिससे आप लूडो प्ले करते हो. दैट इज़ द शेप ऑफ क्यूब. नेक्स्ट इज द शेप ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर ऑब्जेक्ट सच एज सर्कुलर पिलर, a circular pipe, a test tube or a circular storage tank, a measuring jar, a gas cylinder, a circular powder tin, etc. are in the shape of cylinder. You know cylinder shape is the circular pipe. देखा हुआ ना आपने अपने होम में भी, घर पे. पाइप, मेजरिंग जार, गैस सिलेंडर, टेस्ट ट्यूब, पेंसिल. How many examples of cylinder. Okay, a cylinder has a curved lateral surface and 2 cylinder faces at the ends. A cylinder has no curved face, no corner or vertex. A cylinder has 2 plane faces, namely the top and the base. The one curved face, it has 2 circular edges. The distance between its ends is called length. Okay, top, this is the top. Curved surface, base, this is the shape of cylinder. This is the shape of cylinder. Okay, curved surface, this is the top. Okay, this is the base. This is the shape of cylinder. I hope you understand. And next is sphere. I will do continue tomorrow the basic of sphere. Today your homework is page number 210 and page number 211. Read the basic concept and learn the basic concept also. I will continue tomorrow. Okay students, thank you.